We are India's first unfiltered podcast. You know, it would be an honor and a privilege for you to be on my podcast. Balls है तो आओ, नहीं है तो घर बैठो. क्या सोचा था नाम रखते हुए बदमाश बातें? नहीं देखो बदमाश से सेक्स से so she thinks she can bluff her way out of it. ये Gen Z बच्चे आजकल ऐसे बातें करते हैं. इनको स्कूल में क्या सिखाया जाता है? तुम्हारी टीचर्स डांटती वाटती नहीं तुमको? यार मैं तो आपकी लिसनर हूँ. ये पूरी बदमाशी निकाल दी मैंने. तो उसके लिए फ्रेंड्स है ना? नहीं फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स. वो रिलेशनशिप चाहिए. नहीं वो रिलेशनशिप नहीं चाहिए. हाँ. उसको रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर. क्या बोल रही? ओह. Sex after commitment is different. Yeah. And before commitment is different. Second. Yes. Who's the stupid one? Me. Exactly. Reality checks with Simmy Said. Hello people of internet, welcome to another episode of Badmaaash Baatein. Today we have Simmy Said with us. And मेरा तो पता अभी हो रहा है फैन मोमेंट. Really? Yeah. एक घंटा हो गया मुझे यहाँ पे आके. एक बार भी इसका कोई फैन मोमेंट नहीं हुआ. ये सब झूठ है. नहीं धोखेबाजी हो रही है यहाँ पे. कैमरा के सामने सिर्फ दिखावा किया जा रहा है क्योंकि मैं एक घंटे से बैठी हूँ. उसने बिल्कुल मुझे भाव नहीं दिया है. ना ही एक बार भी बोला आई एम योर फैन और एनी ऑफ इट. ना ही मुझे बोला है कि मैंने आपका कोई एपिसोड देखा है. कुछ नहीं बोला उसने. पॉडकास्ट ठीक है कोई बात नहीं. आई स्टिल टेक इट. मैंने मुझे पॉडकास्ट में रिएक्शन चाहिए था कि आप कैसे बोलते हो. अरे वाओ थैंक यू सो मच. अरे वाओ थैंक यू सो मच. बट यस मैंने पता सिमी के इतने सारे एपिसोड्स देखे एंड टुडे ऑल्सो जब आप आने वाले थे होमवर्क आज होमवर्क है. असलियत तो ये है कि आज सुबह जो उसने देखा है बस उसने उतना ही देखा है और वो उसने होमवर्क किया था. दैट वाज द होमवर्क. ये जेनजी बच्चों को लगता है ना कि यही स्मार्ट है. अच्छा, हम यहाँ से निकल चुके हैं बेटा. क्वेश्चन पूछो. अच्छा मैंने खुद ही भूल गई. मैंने इतना क्या पूछूं मैं. कोई एक एपिसोड से मेरे को भी नहीं आ रहा कि ऐसे क्या बोलूं रैंडमली. अच्छा आप सोचो क्वेश्चन तब तक मैं क्वेश्चन पूछती हूँ. बिल्कुल. आई मीन दैट्स हाउ पॉडकास्ट वर्क्स गाइस. सो आप मेरे को पहले ये बताओ कि आप से सिमी सेड व्हाट आप करते हो. ठीक है पर आप ये जो टॉपिक्स आप चूज करते हो विच आर रियली फन एक्चुअली टू वॉच. एंड ऑनेस्टली विद बदमाश बातें मेरे को भी ना पहले था कि यार बदमाश नाम है तो कुछ तो करना चाहिए ऐसा. पर मेरी फटती है टाइटल में ही चीजें डालने को. मतलब इवन तो कॉन्वर्सेशन में वो किया होगा बात. छोटे हो ना यार अभी एज में भी. तो फिर वो तुम्हारा भी वो मम्मी से डर लगता है पापा से डर लगता है. ऑल्दो मतलब मुझे भी लगता है ऐसी बात नहीं है बट वो थोड़ी एज होने के बाद में फिर ऐसा होता है कि हाँ देख लेंगे. हाँ तो क्या ही कर लोगे. नहीं मैं ना जैसे घर से निकाल दोगी वो तो मैं वैसे ही शादी करके चली जाऊंगी. और बताओ. ओह अच्छा तो और क्या करोगे. तो फिर आप ऐसे मतलब गेस्ट को कैसे कन्विंस कर लेते हो कि देखो हम ये करने वाले हैं. मेरे गेस्ट भी वही एज के थे ना. अच्छा मैंने स्ट्रिक्टली इफ यू नोटिस कोई जेनजी या कोई बच्चों के साथ में ऐसी बातें नहीं की है बिकॉज ऑब्वियसली आई कांट डू दैट. फर्स्टली नॉट एथिकल and it's not professional. नहीं जैसे you could have gotten somebody who's 23ish. No, but then I don't think the internet would have taken it very well, no? Like, I mean, they would have. It's not about that, but it's also like I didn't want to go down that road and find out how will the internet react to, with about the whole fact that there's a 21, 22-year-old, kid sitting and then we're discussing real shit. So I was like, see, बाकी सब जगह I've not played safe. I've been really like on the edge with the podcast. But with this one thing, I was very particular from the start कि, we'll spare the kids. ठीक है, taking notes. क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है. So in my podcast, मैं यूजुअली आई ट्राई टू थ्रो इन सम पिकअप लाइन्स और ऐसा मैं कुछ करती रहती हूँ. पर अगेन व्हेन समबडी हु इज यंगर देन मी. Oh, there are people younger than you also on the internet. तो of course they are. I'm kidding. Yeah, I know. उनसे नहीं हो पाता. फिर वो बोलते हैं कि अरे हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे आप हम पे भी पिकअप लाइन मारोगे. फिर मैंने कहा भाई नहीं हुआ, वो आया ही नहीं अंदर से. तो दैट ऑल्सो हैपन्स. बट हाँ मेरे कॉन्टेंट में ना ऐसे बस पिकअप लाइंस में कुछ अब्सर्ड चीजें निकल जाती है जो शायद मेरे पेरेंट्स को भी नहीं समझ आता कि क्या बोल गई है. तो वो पेरेंट्स वॉच योर पॉडकास्ट. नहीं वो पूरा नहीं देखते बट इन माय वीडियोस ऐसा कुछ क्लिप्स वो रील्स वगैरह. हाँ इंस्टाग्राम देखते हैं ना. राइट इंस्टाग्राम. पॉडकास्ट नहीं देखते. वो जैसे 1 घंटे का देखते हैं वो कहते ये इतनी देर कौन देखेगा. एग्जैक्टली बेस्ट. या सो दे डोंट गेट. बट अगर टाइटल देख लेना तो आई डोंट नो शायद देख ही लेंगे पूरा. तो मुझे उधर लगता है इसलिए मैं टाइटल आई डोंट पुट ऐसा कुछ भी कि मतलब बातें की हो ना तो फिर मैं घुमा फिरा के कुछ और कि बदमाश बातें विद
बदमाश बातें with Simmy को बनाया guys. But yes, how did Simmy Said what का concept came? क्या scene रहा? Just wanted a change in the content I was making. Like my content was very makeup, fashion, lifestyle. Yeah. And वो हो जाता है यार, हर क्रिएटर अब क्रिएटिव इंसान होता है ना mostly. So like, you know, you reach that point where you're like, I'm not able to show another side of me, and I'm being very restricted with the way I'm talking, with who I am, and I want to show this fun side also. There's another side to me that I'm ready to show on the internet. I mean, it's not that everybody would be ready. This was a huge step for me also. And a friend of mine had recommended that, you know, a lot of women in the West are doing a podcast like so I was like, okay, that sounds fun, but मैंने कभी सुना नहीं था. I was not a podcast person at all. I was like, never in my life I'll have a podcast. To be honest, because उस time पे podcast का concept was only like informative education. कब की बात है? 2 years ago. अच्छा हाँ. That's when I started planning about it, right? 21 August में I started thinking about it. 21 November and December first week is when I'd launched. And last year, December is when I ended it. So फिर से आएगा थोड़ा टाइम के बाद आएगा. अब मेरे पास स्टोरीज खत्म हो गया. I'm going guys to collect more stories, make it more spicy. अब मेरे पास स्टोरीज खत्म हो गई थी. Like थोड़ा रुक जाते हैं. Okay. But हाँ, makes sense. But हाँ, so when you are like reaching out to people and when you are telling them ये concept है, तो how is the reaction from the people you are reaching out to? The thing is that it's about how you sell it. No, isn't that basic? That is like I never took any this, you know. I was like, we are India's first unfiltered podcast. Yeah. You know, it would be an honor and a privilege for you. Yeah, मैं बदमाश to be on my podcast. मुझे आप बताओ, how should I tell बदमाश बातें? Like, you have time till tomorrow to reply to this email. Or forever hold your silence and never talk to me ever again. But हाँ, मेरे को ये बताओ, how should I sell बदमाश बातें? मेरे को भाई नहीं आता ये. बदमाश बातें, तुमने नाम इतना अच्छा दिया हुआ है बदमाश बातें, तो बात खत्म हो गई फिर वहीं पे वहीं. Just go out there, be like, हम बदमाश बातें करते हैं यार. हाँ, आप आ जाओ. Things that you're not comfortable with, that's all we talk about. हाँ, perfect. ठीक है. Balls है तो आओ, नहीं है तो घर बैठो. I like that. ये tagline होगा. No, but that should be ideally the point of the whole. अगर इतना हिम्मत करके तुमने नाम रख दिया बदमाश बातें, लेकिन तुम्हारी बातें अंदर डिलीवर नहीं हो पा रही है, तो फिर देन यार मेरे को कभी कभी तो मैं शर्मा जाती हूँ. ठीक है, खुद ही नाम रखते हुए नहीं शर्माए थे यार. वो ना क्या सोचा था नाम रखते हुए बदमाश बातें? नहीं देखो, बदमाश तो मेरा ना हैंडल था ऐसे ही. अच्छा, ऐसे ही? हाँ, ऐसे ही था. कोई रीजन होगा ना? नहीं था. अरे रीजन बहुत लंबी कहानी है. अच्छा. इट वाज जस्ट दैट कि मेरे स्कूल में मेरा अकाउंट डीएक्टिवेट करा दिया मेरा सुकृति ग्रोवर, तो मेरे को खुद ऐसा माफिया टाइप रखना था, मैंने बदमाश रख दिया एंड इट हैज स्टक. तो माफिया से बदमाश रखा. बदमाश मम्मी बोलती बदमाश कहीं की, और इसको बनना था माफिया, बट देन शी सेड इट फॉर ऐसा कुछ, यू नो, कि खुफिया टाइप कुछ करना था, तो मैंने कहा बदमाश बनूंगी मैं ऐसा. तो रिबेल मोड. हाँ, टीनेज स्कूल ने कैसे बन टीनेज गर्ल्स, यू नो. या तो फिर अब उसका जब मैं पॉडकास्ट खोला, मैंने पॉडकास्ट का क्या नाम रखी, उसका बदमाश बातें. तो व्हेन आई डिड माय फर्स्ट एपिसोड, तब तो नाम भी डिसाइडेड नहीं था. आपने कैसे डिसाइड किया? सिमी सेड व्हाट? नहीं, वी तो पुट इन अ लॉट ऑफ थॉट. अच्छा, आपने ऐसा सोचा? या बिकॉज इट वाज अ वेरी day one से I knew I'm going to do controversy. That was the whole point of it. Like, not controversy, it was that I am going to stir it up a little, even for myself. It's exciting. It's so exciting to be in the middle of, oh my god, who does she think she is? Oh, it's fake stories. ठीक है भाई, तुमको मैं थोड़ी तुम्हारे घर पे आके प्रूव करने वाली हूँ फेक था कि रियल था. तुमको नहीं माननी ना मानो मेरी बात, मतलब who am I, right? हाँ. But the whole point was to keep things on the edge for myself, for the audience, for my parents, for everybody involved. But यार parents. Simmy Said what is like Simmy Said what? You know? पर मैंने आपके बहुत सारे एपिसोड्स देखे हैं, तो इसलिए मेरे को काफी कुछ तो मालूम है. आप अगर मेरे से कोई स्टोरी अपनी पूछोगे तो मेरे को पता होगा. बताओ, कोई एक स्टोरी बताओ, आपकी फेवरेट स्टोरी ऑफ माइन. यार ये तो बहुत ही रैंडम हो गया. अरे नहीं, so she thinks she can bluff her way out of it. अरे नहीं, ये ना वो सिचुएशन हो गई जैसे स्कूल में जब वाइवा के लिए वो बोलते हैं ना, आपको जो आता है बता दो. आपने खुद ही बोला अभी पूछ लो मुझे, तो मैंने कहा ठीक है बताओ फिर, और क्या.
सोच रही हूँ मैं, अभी मेरे को भी टाइम चलो हाँ मूविंग ऑन। हाँ, सो आपको ऐसे कमेंट्स वगैरह में क्या सबसे ज्यादा ऐसे आता है कि ब्रो यार ये तो कभी ऐसे एकदम हिट हुआ है कि ब्रो कमेंट्स I think initially तो होगा ब्रो बहुत ही। so Yes. a quick fact that my first few episodes have been shot in the same very setup that she's shooting here right now, so there's a lot of nostalgia. There was this one time where किसी ने कुछ बहुत ही nasty comment किया था on one of my posts, one beginning videos, beginning में starting में, and I thought I'm very solid in terms of like I'll not be shaken and I'm strong and this and that घंटा वो एक comment पढ़ के मेरी तो मतलब not like there were not comments, but this one in particular was something very nasty. Yeah. And I remember I was just shooting for another episode here and I read the comment and I could not shoot it. I went outside, I cried a lot. Then I came back. I was like, okay, I'm fine now. I let it out. I'm sitting in front of the camera. I'm just not able to talk. Every time I open my mouth, my throat is choking up. And I'm like, what am I doing in life? And then I'm like, then I went back again, this, that. All of that happened. And that one day, everybody decided that aaj nahi hone wala hai. Let's just wrap it. They called for ice cream and stuff. But guest ही थे क्या तब? No, that was my solo episode. Achha. And they called for ice cream and all of that. We had dinner and all. And we were chilling. And they were like, it's fine. We'll try again tomorrow. So then I went home, prepared myself. But then from there on, it was a whole journey of finding your own center. In the sense that doesn't matter कि लोगों के opinions क्या है तुम्हारे बारे में about anything, and I am myself putting myself in a spot like that where people will say things. Yeah. So then I can't cry foul, and then I can't be like, oh hey, why are people saying things like that? Although it hurts, that's a different thing. Yeah. But then you're choosing that, and when you're choosing that, then you fucking take it. Take it like it's am. Reply back. No, not important. DMs वगैरह में Not important. Like I would never spend time on hate comments. आ जाता है ना, like कभी ना comments में नीचे अगर कोई कुछ लिखता है तो मैं बहुत ही sarcastic, exactly the way they speak, I give it back to them कि उनके पास कुछ भी ना हो आगे reply करने, और उनके पास नहीं होता. Like I'm very shady like that. So if I have to give them back, अगर उन्होंने कुछ भी लिखा होगा, say for example, something like this, I will directly say हाँ तो your mom or your sister or something like that. Yeah. Directly call me out on that. I don't care. Put it on Reddit that, oh, Simmy does this. Doesn't matter, but that's the only way I can get back to these guys. If you hurt me, I fucking hurt you back, bitch. This is how I do it. I know where it hurts. I will hurt it there. So yeah. Right. हाँ, so but in general, जैसे ये तो हो गया कि when you are responding to like in their own way, but कुछ ना ऐसा कभी कभी like this happens with me, तो मेरे को ऐसे लगता है कि बाकी क्रिएटर्स में भी होता होगा शायद से, but कि when they are saying something तो एकदम से aggression, because अगर कोई दोस्त आपको वो चीज़ लिख रहा है, some दोस्त में नहीं, acquaintance अगर कुछ चीज़ लिख रहा है, so you often reply them in a certain way कि bro नहीं, even though you want to ignore it, you sometimes do reply. तो तब आप कभी कुछ आपने कभी ऐसा करा है? But then that is why are you expecting things from people about their behavior, about their opinions, about their, why are you expecting? तुम्हारे हाथ में है कि वो कैसे रिप्लाई करेगा, तुम्हारे हाथ में तुम्हारे रिप्लाईज हैं, राइट? उसके दिमाग में घुस के तुम उसके हाथ के अंदर जाके रिप्लाई तो नहीं चेंज कर सकते. लेना होता है, so how does it matter? लेने हैं तो got it. Yeah, because ये चीज़ ना मतलब I have seen a lot, और मैं होती हूँ कि I will give it back, तो मैं जवाब दे देती हूँ फिर कमेंट्स में, फिर मैं कहा हाँ ठीक है, लड़ो कोई दिक्कत नहीं है. No, but then like हाँ, I think fair, your journey of finding out by yourself. Hey, you have a few years ahead of you. Oh, okay. Yeah. मैं ना actually जो सबसे first question होता है ना इस podcast में, मैं भूल गई पूछना, but I'll ask now. Hi Simmy, what do you do? Why do you do? Who do you do? Who do you do? She said. She just asked me, who do you do? Oh my God. Wow. I mean, ये Gen Z बच्चे आजकल ऐसे बातें करते हैं, इनको स्कूल में क्या सिखाया जाता है? तुम्हारी टीचर्स डांटती वाटती नहीं तुमको? या मैं तो आपकी लिसनर हूँ. अच्छा. हाँ क्या? What do you do? हाँ. So hi Sukriti. I am a content creator and I create content. I create content on a lot of things, right from makeup, fashion, gym, lifestyle, this, that, blah, 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 to sex, podcasts and all of it. And why do I do it? Is because I did not want to work under someone. So I wanted to do something of my own.
and I wanted a work that could give me freedom enough to like do it from anywhere that I want to, and be as creative as I can, have my days off, all of that. So obviously, I mean, you choose, and I had that sort of a freedom and time in my life to like choose and then go for this. Although I did go through several careers before this, but I stuck to this because I like it. Although कभी कभी burnout हो जाता है बहुत ज़्यादा. Why do I do on कर दिया? और Who do you do? who do I? That's a secret coming out soon. Oh, let's go. But so you said कि you have tried, like you have done different careers, ऐसा अलग अलग चीजें have tried. तो क्या, what were they? So I was into corporate for a year. I quit after a year. Then I was a makeup artist. I was a first I was a makeup assistant in Bollywood. Then I was a bridal makeup artist. Then I started with YouTube. Then I became a full-fledged content creator. Then I became a podcaster. Then now I am in बदमाश बातें. I am in बदमाश बातें, जिसमें हम बिल्कुल बदमाश बातें नहीं कर रहे हैं. हाँ. यार आप बताओ कैसे इसको बदमाश बातें कर सकते हैं. I think you are the best person who can tell me. आप मेरी उम्र का लिहाज मत करो. नहीं वो तो मैं क्यों करूँगी. But आपका बदमाश का genre क्या है? मतलब what is the thresh? What is the limit यार of बदमाश? मेरे लिए तो बदमाश. Can you say sex? Say. Better. So basically it's not as बदमाश. नहीं क्या बोल सकते हो? I can say sex. It's fine. I can talk about it. जोर से बोलना. भाई मेरे को ऐसी शर्म आ जाती है. आप spot पे not as बदमाश as I thought. No, आप मेरे को spot पे रखो. बहुत माफिया बनना था इसको. माफिया, गैंगस्टर, बदमाश. But आप यार आप एकदम से बोलोगे तो नहीं. फ्लो में बात करते हुए I can say it. अच्छा. बट आप ऐसे जब अपने कॉन्वर्सेशंस प्रिपेयर करते हो, जब लाइक कॉन्वर्सेशंस नहीं एज इन द थीम्स और टॉपिक्स यू गोना डिस्कस विद द गेस्ट या कुछ, तो उसका फ्लो हाउ डू यू डिसाइड? बिकॉज आई हैव नोटिस्ड अ पैटर्न जिससे आपको पता लगा कि मैंने सुनती हूँ, ठीक है, कि पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और कॉन्ट्रोवर्शियल सा पार्ट रहता है, देन यू बिगिन, अच्छा नाउ यू टेल मी योर स्टोरी, एंड देन दैट्स हाउ द ये मैंने फ्लो ऑब्जर्व किया था काफ़ी, कि बहुत जगह पैटर्न था, स्पेशली लाइक सीजन 3 वाले में ज़्यादा मैंने देखा था. सो ये आप कैसे, like what is your way of putting it out? We used to decide on a topic, whatever topic the guest was comfortable, because I can't. So you give them some topics? I do give them, because see, I can't put them on the spot and be like, we'll be talking about masturbation today. What if the person is not okay, and then they be like, chal main nikal raha, bye. You know, and I'll be like, bhai bahut kharcha kiya, baith jao. Nahi, I have to inform them beforehand, give them a couple of topics, then they will decide and tell me which ones are they comfortable with, things that they can talk about, and we then close in on that one topic, and then we move ahead with that. तो फिर so when they decide and they tell you कि हाँ हम इस topic पे करते हैं, so you already have like a flow prepared कि हम ये कर सकते हैं उसमें? मतलब not always. It used to be very me. अच्छा, okay, so you would just I would want to have some masala around it, or like create some masti around it. नहीं मतलब, but मेरे को honestly ऐसा लगता था कि even though the conversations were free flowing, मुझे ऐसा लगता था कि because ऐसा मैंने observe किया था, there is a I mean there used to be a certain flow. Yeah. Because obviously intro है, तुम पहले start कर रहे हो, topic introduce कर रहे हो, और उसके बाद फिर topic के बारे में बात कर रहे हो, and then towards the end then you wrap it. Because I wanted to stick to 30-35 minutes or 40 minutes max. और अगर मैं off topic हो जाऊंगी then it takes more. So I had to, because then even the guest gets a little, oh okay, क्या हो रहा है? So then that's how I would just keep it concise and like simple. Even if we don't get a lot of content, 30-35 minutes में we'll have enough. You know? True. So so आपका एक conversation is for how long? Recorded would be 45 minutes to 50 minutes or 1 hour max. मैंने जेक वाले में सुना था आपके 2 घंटे का. हाँ, वो वाला एपिसोड बहुत लंबा चला था. वो वाला, so very few episodes there are जो चलते जाते हैं, और फिर then you're like, ठीक है, we don't want to stop the flow because it's still on the same track. Yeah. And then we'll figure out on the edit table कि क्या करना है, इसकी क्या रखना है. So how do you decide अब रखना क्या? Because I don't decide actually. What happens is that when I leave some things to the editor and like my team. हाँ. I do not want to meddle with a lot of things. Yeah. ठीक है. And if he is listening to it for the first time,
उसको पता चल जाएगा कि क्या फन है और क्या बोरिंग है और क्या नहीं है, बिकॉज ही इज बीन एडिटिंग माई स्टफ, राइट, सो ही अंडरस्टैंड्स माई स्टाइल। और अगर कुछ बोरिंग चंक होता है वो खुद ही निकाल देता है। गॉट इट। बट मेरे को ना ऐसा लगता है कि इवन इन अ पॉडकास्ट, मतलब मैं कोई भी इन जनरल इफ आई लिसन टू एनी अदर पॉडकास्ट ऑल्सो, मुझे ऐसा लगता है कि द कॉन्वर्जेशन इज सच कि यू वांट मोर ऑफ इट। मतलब अगर इफ इट्स लाइक अ 20-minute कॉन्वर्जेशन और तुम्हें पता है, अब जैसे आई गॉट टू नो कि जैसे जेक वाला एपिसोड वाज लाइक 2 hours, मैंने कहा भाई मेरे को तो ये पूरा सुनना है, लाइक ऐसी क्या बात हुई थी उसमें। सो नाउ देयर इज लाइक सर्टेन क्यूरियोसिटी आई वुड से। तो ऐसा आपको नहीं लगता कि मे बी 2 hours वाला आई कुड रिलीज इट ऑन स्पॉटिफाई एंड विदाउट एनी फिल्ट्रेशन? ऐसे कुछ था ही नहीं। सी ऑल ऑफ माय कंटेंट एनीवे लाइक वाज वेरी अनफिल्टर्ड, सो वो जो भी बात भी कर रहे होते थे इट वाज अनफिल्टर्ड। द ओनली रीजन दैट आई वी चक्ड दैट पार्ट इज बिकॉज वहाँ पे वो थोड़ा सा ऐसे अटेंशन वुड हैव बीन लाइक लॉस्ट बाय द ऑडियंस और द व्यूअर, बिकॉज वो थोड़ा से वो होता है ना, तुम ड्रैग हो जाता है एक टॉपिक बहुत ज्यादा लंबा, तो वो यहाँ वहाँ ये वो ऐड होते जा रहा है, तो जिसका कोई सेंस नहीं बन रहा। बट व्हेन यू कीप इट क्रिस्प एंड देन यू हैव दैट अटेंशन देयर। यार मेरे को भी, लेकिन लाइक पीपल कीप सजेस्टिंग टू मेक माय पॉडकास्ट शॉर्ट। अब मेरे ऑलरेडी 50 से 1 घंटा होते हैं, व्हिच आई फील इज लाइक अ डिसेंट, मेरे को तो अच्छा लगता है। लाइक बट व्हेन यू लाइक इट, व्हेन यू दैट इज योर, बट देन ऑडियंस ही तो देख रहे हैं ना, लोग देख रहे हैं, तो आई जस्ट गेट कंफ्यूज कि ब्रो आइडल ड्यूरेशन क्या रखना चाहिए। I get very confused with that. Why are you confused? That's your consumer. If your consumer wants something, why would you not give them? Yeah. But फिर मेरे को ऐसा लगता है ब्रो ये भी तो अच्छी बात की है। वो तो तुमको लगता है, बट अगर वो उनको नहीं पसंद आ रहा तो तुम्हारे अच्छे लगने से क्या होता है? तुम उनके लिए बना रहे हो कि अपने लिए बना रहे हो? Guys, comment below and let me know कि तुम्हें पूरा देखना है। मुझे सजेशंस चाहिए, लेकिन जो मैंने बोला है मैं वही करूंगी। Yes. बस मेरे को बस आपसे सीखना कि मैं मसाला कैसे ऐड कर सकती हूँ। वो तो यार मैं ना, देखो मैं आपको बताऊँ, मैं पहले घर पे मम्मी पापा को बिठाओ, हाँ उनके सामने 5 बार पहले उनको नहीं, उनको बोलो कि भाई देखो ऐसा है, आज के बाद मेरा पॉडकास्ट सुनना मत। दूर रहना मेरे पॉडकास्ट, मेरे किसी भी कंटेंट से आप दूर रहोगे। आपका मेरा रिश्ता जो है वो सिर्फ बेटी का है, बेटी और पेरेंट्स का है, ठीक है, लेकिन एज अ कंटेंट क्रिएटर आप मुझे नहीं जानते हो। या बस ठीक है, उसके बाद जो मर्जी करो। मैंने एक्चुअली पता ट्राई किया था कि वो जो एक स्टार्ट नहीं हुआ था, दैट थिंग आस्किंग गर्ल्स आंसरिंग ऑकवर्ड क्वेश्चंस गाइस वुड वांट टू आस्क, ऐसा समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ तो ट्रेंड हो रहा था। तो आई गॉट दोज क्वेश्चंस फ्रॉम द इंटरनेट। मेरे साथ एक फ्रेंड ऑफ माइन वाज देयर, हम दोनों बस बैठे थे, लाइक वी वर इन मनाली। हमने सोचा हम चलो ट्रिप पे आए हैं तो कुछ पॉडकास्ट भी अब कर ही लेते हैं, जगह अच्छी थी तो कर लिया। तो अब नाउ द आइडिया वाज कि वो क्वेश्चंस वर एक्टिंग एज प्रॉम्प्ट्स, कि हम अगर कुछ क्वेश्चन है कि डू यू प्रेफर, डज साइज मैटर, ऐसा कुछ क्वेश्चन है अगर, तो it would just act as a prompt and we could get into the stories of a prompt as in like prompt की तरह ना, कि ब्रो अच्छा बट यार साइज से मुझे याद आया ब्रो एक बार ही ना ऐसा सीन हुआ था, तो अच्छा then you getting in stories, हाँ, ऐसा सीन था कि वो बस prompt की तरह एक्ट करेंगे। तो हमने ऐसा ट्राई किया था, बट मेरी दोस्त को समझ नहीं आया, उसको लगा हाँ ना मैं जवाब देना है, तो ऐसा सीन हुआ, बट इट वाज फाइन। बट दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैं एक्चुअली बहुत अनफिल्टर्ड होके ये सब डिस्कशन किया, ऑल्सो बिकॉज द कंपनी वाज देयर, कि तो तब मेरे को समझ आ गई कंपनी ऑल्सो मैटर्स। अब जैसे अगर मैं फर्स्ट टाइम see, it's not that, it's also when you have a podcast, and you are the host, it's not about the guest making you comfortable, it's about the host making the guest comfortable. हाँ, मेरे को फिर बैक इन द हेड में को लगेगा नहीं, you're young अभी, अच्छा you'll get there. ओके ठीक है, तो आपसे मैं ट्रेनिंग लूंगी कि बदमाश बातें को और बदमाश कैसे बनाया। ब्रांडिंग कर दो तुम यार। मतलब कि ये बस बदमाश, ये गलत चीजें सिखाएगी लोगों को इंटरनेट में। नहीं यार मेरे को बस ऐसे थोड़ा और ऐसा अनफिल्टर्ड कराना सिखा। नहीं, but see, that's your own journey of getting comfortable with who you are first, and then being able to talk about those things in a manner that you don't yourself find embarrassing or disrespectful or awkward. Right. So if you find it awkward somewhere in your heart, if you yourself are not comfortable with the whole aspect of sex in any manner, you will not be able to speak about it because there's still shame attached to it. Right. But when you grow up, now it's too young anyway for you to even understand, because sex is not just sex, it's vast, and it's a very intimate
thing. It's a very intimate act, but then it's also very casual now. So, understanding, and there is a very delicate balance between how you put it out, how you speak, how you are perceived while you're speaking, and all of it. So you can't just directly jump from this to then talking about that, or just being a complete badmaash version of yourself. That doesn't happen overnight. That will take you years. That will take you time for you to first love yourself, for you to first understand what sex means to you, for you to first remove the whole shame from it, so that when parents also see, you can still look them in the eye. Right. You can still look them in the eye and be like, so what? Because when my mom had a discussion with me, I remember first time I was a little awkward. Yeah. But the next time I was like, yeah, but what? ऐसा तो नहीं है कि like you don't know what's happening outside. But then I had also reached a point in my life where I was comfortable. True. So I could speak about those things. And very openly, in fact, in my house. So, अगर तुम वो घर पे नहीं कर पाओगे तो बाहर भी नहीं कर पाओगे. हाँ, घर पे तो मैं नहीं कर पाती. बस, तो then it takes time. घर पे तो भाई मैंने ये सब चीजें ना पिकअप लाइन में छुपा के कहीं ना कहीं निकाल देते, तो उन्हें समझ नहीं आता कि ब्रो क्या कहेंगे. नहीं, वो that is okay. Yeah. But that's what I'm saying. That's your own journey of getting comfortable with the whole thing. Yeah, true. But if you're not, abhi, to you're not. That's okay. Don't force yourself. Yeah, it feels very like you want to do it now. But I'm not comfortable also. I just feel, तो मेरे को ना ये चीज क्योंकि आ गई है, अब काफी लोग ने बोल दिया कि ब्रो बदमाशी कहाँ है. मैंने कहा badmaashi can be a lot of things. Doesn't have to be just sex. No, it's not just that. By like getting into that space entire कि भाई थोड़ा सा और आप करण जौहर vibes दो. No, तुम prank हो सकते हो, prank कर सकते हो बहुत सारी चीजों में. तुम you can do a lot of other badmaash things. Yeah. Why directly jump there so soon in life? Right. Also, another thing I'll tell you is that because you're too new in this journey, right? Just generally, see, this age here, I know I can handle whatever. I know I can handle if, people say things to me, my family or something like that. Not my family, I don't take that very lightly. Yeah. But like if people say things to me or whatever it is, I know I can handle it, and I know how to deal with it and how to separate it from my life and, whatever. And I also know that how I can moving ahead, because now the podcast is on a pause. Yeah. And I'm not sure when I'm getting it back. Not for any of the reasons that people, whatever. It's just that it was jinxed so bad that I could not get it back up. Like I tried really hard. Yeah. I could not get it back up. So I've just been like, okay, maybe this is what universe wants. I got what I wanted out of it. Like, there's a lot of experiences, memories and all of that. And so I bow down to nature and universe for giving me the, the opportunity. But that's it. Maybe this is it about it. Now we move on to the next phase of our life. And now when I move on to the next phase of my life, I'll reinvent myself there. Next phase as in? Whatever next I do, which I'm doing anyway. Okay. But then I'm reinventing myself, and life is always giving you opportunities. It's just that you need to look. And so Simmy is not just somebody who talks about sex. Yeah. Simmy does a lot of other things also. It's just that sex is something which is just, it hits you too strong in your ears, and so then you hold on to that. But then I can reinvent myself as another person also, as something else also. But I have that sort of a bandwidth. Yeah. And I have that sort of understanding within myself. So, you are too soon here. So would you have started... Too early in your life to be associated with just this. With this genre, yeah. But if you were, let's say, around this age only, 24 to 25, 25 Simmy, would you have started a pod? 24-25 Simmy, though, she was collecting stories for the podcast. 24-25 Simmy was collecting stories for the podcast, and so that when she would turn 27, 28, she would have a podcast. I mean, you see, you gotta live a life. हाँ, but मेरे को that's see, when you live a life, you form a personality. So how many people have you dated? So, I've dated one person. One person. I've been in a relationship with one, just one. Long term. Yeah, very long term. Wow. I haven't dated anyone after that. I've met a lot of. मुझे आप blessing दे दो. मेरे से blessing लो. मुझे भी चाहिए एक long term relationship. सब लड़की में चाहिए होती है. मिल ही नहीं रहा है. वो इतनी जल्दी मिलेगा ना, टाइम आएगा. सब कुछ अभी चाहिए तुमको यार. ये Gen Z को सब कुछ अभी right now. Just want it now. हाँ. यार मतलब ऐसे ही बहुत टाइम हो गया. मैंने लास्ट डेट किया था शायद से 10th ग्रेड में. और वो क्या ऐसे ही था. कौन से ग्रेड में अभी आप? 23 की हुआ है अभी. कॉलेज खत्म हो गया आज.
शुक्र है। हाँ, तो मतलब बहुत टाइम हो गया बेसिकली, उसके बाद टाइम ही नहीं हो पाया डेट करने का। हाँ, तो जब होगा तब अभी है, अभी टाइम है। हेलो गाइस, ड्रॉप अ कमेंट, स्लाइड इनटू माय डीएम्स। हाँ तो वही। बट यार आपको ऐसा तो व्हेन यू वर डूइंग पॉडकास्ट वर यू सिंगल? या सो अगर आपको कोई सब्सक्राइबर, they have asked, हाँ, they would have asked, they've asked, two guys also sent me a rishta हाँ, proposal, like proper शादी का proposal. बट अगर वो हॉट थे तो आप, मतलब वो हॉट थे या? It's not about hot, it's about other attributes of a person that you're also looking at, जो तुम देख के एक, when you reach a certain age, no, एक look में पता चल जाता है, a lot of things. Yeah. You need to have that eye. But are you that kind of a person who would never would want to date a subscriber or follower? मतलब कुछ काफी लोग का मैंने देखा Nothing है. like that. I'm just moved past that phase. Okay. Yeah, it's not about dating anymore for me. अच्छा, इस तरह की अब तो शादी. हाँ मतलब हाँ, हाँ शादी. what is long term for you, like 10 years 5 years 2 years? So long term का क्या मतलब होता है? हाँ हाँ. क्या? True. नहीं क्या? मेरे लिए तो हाँ दो तो चलना चाहिए. दो चलना चाहिए. अच्छा 2-2.5 साल तक चलेगा. फिर देखेंगे, अब बोर हो रहा है. हाँ. Now it's time to move on. Yeah. Switch. मैं तो कह Find रही हूँ another भाई, one. अब मेरे को बॉयफ्रेंड भी नहीं, अब मुझे चाहिए फ्लैटमेट. हाँ. Okay. I can so very well see where this will end in life. You know, like setting yourself up for trouble. क्यों? नहीं क्यों मतलब करो आप, उसके बाद मेरे को समझ नहीं आया क्यों ऐसा क्या बोल दिया मैंने. कहाँ से एक्सप्लेन करूँ मैं, शुरू कहाँ से करूँ, मैं ये सोच रही हूँ शुरू कहाँ से करूँ एक्सप्लेन करने के लिए. बताओ ना, मैंने क्या बोला. Okay, so what does a relationship mean? खत्म. इसको कैसे जवाब देते हैं. क्या चाहिए, मतलब चाहिए क्या तुम्हें? Relationship is like having a companion throughout. Throughout what? चिल करो. और Throughout what? थ्रूआउट मतलब ऐसे अगर मैंने आज पूरा दिन पॉडकास्ट खत्म करा है, देन एक बंदे से मैं चिल करूं. Okay. यार तो हंस क्यों रहा है यार. मेरे को कौन चूज कर दिया. हाँ तो बस यही. बस that's it. हाँ. तो उसके लिए फ्रेंड्स है ना. नहीं फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स. हाँ. वो रिलेशनशिप चाहिए. नहीं वो रिलेशनशिप नहीं चाहिए. हाँ. उसको रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर. अच्छा. क्या बोल रही. ओह. पर अगर वो नहीं हुआ फिर? वो नहीं हुआ तो फिर हार्ट ब्रेक. हाँ, नहीं हार्ट ब्रेक नहीं. फिर ठीक है, बाय. अच्छा. इजी यार. काफी इजी लग रही है लाइफ यहाँ पे मुझे. नहीं हाँ एग्जैक्टली. स्प्रिंग समर कलेक्शन हो गया. नाउ वी मूव ऑन टू. हाँ बट Another one. आप वो जैसे आपको वन पर्सन ओनली. हाँ. अच्छा आप लोग. I mean ऐसा नहीं है. I had my 5-6 years where I had my proper whole face. कब? 5-6 years back. अच्छा. Okay. And because I had just gotten out of my long-term relationship, I took a gap of 11 months, 12 months. And then I started, I thought dating would be easy, right? Like, Yeah. I don't know what आप dating. बम्बल यूज कर रहे थे, टिंडर बम्बल. हाँ मैं सब यूज कर रही थी, but then I ended up matching with men who had similar ideas of a relationship exactly like you do. कि पहले फ्रेंड विद बेनिफिट्स फिर रिलेशनशिप. बस सिर्फ फ्रेंड्स विद बेनिफिट. अच्छा नहीं, मेरे को दो. फिर रिलेशनशिप तक पहुंचते नहीं है लड़के एक्चुअली में. See, the thing is that this is where we get confused and we think कि you know you give in to the temptation that easy. यार ये मैं क्या बड़े बड़े लोगों की बातें कर रही हूँ आगे मुझे. नहीं सही है, कोई बात. No, but then see, sex after commitment is different. Yeah. And before commitment is different. Sex is actually Okay. Sex is, what is sex? इसका कैसे जवाब देते हैं भाई, नहीं मालूम मेरे को. It is an expression of love. Okay, ठीक है. What is what do you mean by an expression of love? That's how you express love. हाँ. Where is the love? Did the love happen? You want the love to happen after. Although I'm not saying that I'm against bro, I've lived my life.
Nothing like that. This is just some learnings that I've taken, personal learnings, not taken from anyone, not taken from counseling भी नहीं हो रही है. मैं सिर्फ बता रही हूँ कि when you know what you want, if you know what you want, I want a relationship. You don't want a relationship. Okay. You are not clear on that. Achha. When you know, you know. So when you want a relationship, you are clear on yourself that this is what I want. So friend with benefits. अगर रिलेशनशिप तो सीधा उसको बोल दो रिलेशनशिप नो फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स. नहीं सीधा ये मत बोलो, तुमको भी तो पहले देखना है ना वो बंदा है भी कि नहीं. जस्ट बिकॉज देयर इज अ वाइब. और हमारे सी आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट व्हेन यू थिंक ऑफ लॉन्ग टर्म इट्स नॉट 2 years. Okay. You know, then it's for then it's शादी. Yeah, it's for life. It's for life. हाँ. I would rather अरे यार ये सब मैं बच्चों को कैसे explain करूँ. आप मेरे को बताओ मैं समझूँ. I would rather have somebody with me through my thick and thins, not just in the bedroom. You know, somebody that I know that will be there irrespective of. I want that. No, you don't want that. Because you have to give that in return also. I will give. Nahi, you're not ready. You have to know what you want, and to know what you want, you need to know who you are first. जब तुमको खुद नहीं पता है कि तुम कौन हो, कहाँ हो, मेरे को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, where am I in life? इम्तियाज अली फ्लॉन्ट हो गया. Then if another person comes, even if he is a package deal, you will not be able to match with him because he's a good boy now. Because he's too good. Because he wants a relationship. Oh, because now the vibe is not there. Oh, there is no banter. Oh, he doesn't give me those butterflies. But the thing is, reality में you don't need butterflies. But anyway, it's your journey. Oh, too detailed. नहीं यार समझ आ Too intense. Yeah, I get it. हाँ, so उसके लिए ना क्या होता है कि पहले there's this thing called know thyself. So you know yourself first. And know thyself is a lifelong journey. Lifelong तक आदमी अपने बारे में सीख रहा होता है. There's no end to it. Okay. So are you going out on dates अभी? I am. Okay. So आपकी कोई ऐसी कोई एकदम disaster date story? Yeah, this one time I went out on a date. A guy slightly older than me. Yeah. 2 years, 3 years. Are you into older men? या कुछ 3-4 years is fine. नहीं अपने से कम भी ज़्यादा only? I can't do young. Yeah, same. Yeah. I mean, older is something that makes me feel safe. Yeah. In the sense that I know that they're mature enough to handle something as intense. They've been through their share of ups and downs in life, and you know, now they've reached that stable point. यहाँ पे मुझे पता है कि यहाँ पे अभी कुछ drama नहीं है. मतलब drama as in like conflict is always there, but like drama नहीं है in terms of like how you deal with boys. You want a man. So yeah. Sorry. So this one time I went out with a guy 3 years or 4 years older to me. And I remember I just matched with him, and it had just been a week, I think. And we were talking, and then he asked me out on a date or something, and he lived really close by. And you know, you as a woman, you're always in that phase sometimes where you're just bored, and you just want to dress up and go out to a nice restaurant and just have good food because friends free नहीं है या कुछ नहीं है और बहुत बोर हो रहा है. जो भी है तो अभी ये बंदे ने बोला तो चलो चलते हैं, अच्छे से कपड़े पहनते हैं, ड्रेस पहन के रेडी होके you go. I went there. Now, right from the first, like whatever, I went there. I reached early, 30 minutes early. वहीं पे क्रॉस हो गया. वो बंदा 30 minutes late आया. The 30 minutes late आने के बाद में he's making a whole show of his entry. The entry was grand. Like he enters and then he's so loud with his entry, like talking to waiters and doing this. Hi, yeah, wo. Was he from Delhi? No, I don't know where he was from, but like, I don't know, but just too loud and too show off, you know, it's such a turn off. Yeah. Then he came and you know how when you meet a person for the first time, you do a side hug. This person is doing this, like, you know, my cheeks and pulling my cheeks and all. I was like, what the fuck? Who does that? Anyway, again, sat down, ordered for a whole bottle of wine. मैंने कहा तू ही पिएगा ये. Anyway, then sitting and talking to me and whatever, talking about investments and all that, some money, something. I was like, yeah, even I invest. He's saying, ओ छोटू बाबू इन्वेस्ट करता है. ये मैंने किसी पॉडकास्ट में स्टोरी सुनी है. हाँ, ये वही स्टोरी है. एंड आई एम लाइक, छोटू बाबू तेरी माँ की देखो बताओ, छोटू बाबू. एनीवे, and I was taken aback. I was like, what the fuck is going on? So, and he's chill, like उसके लिए उसने कुछ गलत नहीं किया, nothing. And I'm just playing along. At this point, I'm just playing along. Okay.
Now, there's an actor, TV actor, who's right beside us, next table. And I know him. I've seen him somewhere, but I don't know his name. And so this guy goes up to him and he's like, "Oh, I just saw your recent interview here and that. And I just wanted to say I loved it. I loved your whole performance, this and that." And then he calls him over to our table, and then he makes me introduce him. I say hello, he says hello, all of that happens. Then he says, "But sir, आपका नाम क्या है?" Bro. So at this point, I know this is definitely not the guy, like, khatam. But now I want to have my fun, right? Just to prove myself right, okay? Yeah. So I'm sitting and then I'm like, "Oh, so tell me about your previous girlfriends." Yeah. And then he's like, I was like, "By the looks of it, you look very sad the second I mentioned it. Were they like really bad, like psychos?" He's like, "Oh, आपने तो मेरे मुंह की बात छीनने में कहा." जी बिल्कुल, of course. Then he started singing some random old sad song. Yeah. And he's asking me to sing for him. भाई बस अब इससे ज़्यादा नहीं होगा. What was the duration of this? 1.5 hour. Okay. आधा घंटा तो आपने वेट किया, उसके बाद हाँ. और उसके बाद then he's like, "I'll drop you home." I was like, "तू मेरे घर के आसपास भी नहीं आएगा." सवाल ही नहीं है कि you're dropping me home. And I said something and I left and I blocked him. So वैसे वो तो अभी आपने बोला कि this grand entry show off is a turn off for you. See, it could be some women could like it. Yeah. Maybe if you are into such men who are pompous, Yeah. who are who do grand things, but then grand in the manner that it's all about them. Yeah. And the whole conversation is about them. Everything is about them. If you are a woman like that who wants a man who makes everything about him, then go for it, dude. Like, wow. Yeah. Like, congratulations, you found yourself a But match. what all are turn off for you? That's a very subjective. That's a very personal thing. I think you. for me. Yeah. Show off. Yeah. Odor. Yeah. Obviously, odor. What else? If I have to pick a place, like, I will not pick a place, please. I want you to do all of the work. I can't do it. I'm the last person to But know what of if place. वो जो जगह choose करे वो I'm okay. See, I'm a very flexible. Okay. But with that, I'm also giving you the fact that I'm flexible. I'm not doing drama. Yeah. But I want you to plan the evening or whatever it is. Or another turn off is not keeping up commitments. Like, as in, I will call you this time, but then not calling. And the thing is that we downplay it so much as women that it's okay. मतलब call ही तो है, नहीं किया होगा, कोई बात नहीं, busy हो गया है, जो भी. True. But we downplay it so much to the point that we start minimizing ourselves in the whole thing. कि ठीक है, मुझे नहीं कॉल किया तो चलेगा, मतलब वो उसका काम ज़्यादा. But then why did you say you will call? There's a certain word that you need to keep. So these boys don't understand. But then फिर लड़कों का भी ये होता है ना कि bro तुम इतना वो क्यों हो रहे हो कि नहीं तो वो क्यों हो रहा है? If you can't handle it, it's okay. I'll talk to someone else. अच्छा. Because this is my standard. This is what I expect out of this relationship that I have with you. That if you are saying, और अगर आप busy हो, I totally respect that. I totally understand and respect the fact that you're busy and you cannot probably be available for me right this very moment. And so you drop me a text saying, "Hey, I am caught up and I will call you this time." Say, "I will call you 3 months from now." Doesn't matter. True. I will call you 2 years from now. Doesn't matter. But then if you are, a guy who's pursuing someone, or you're constantly talking to a woman and whatever not, then you have to make sure that you're there. You tell her, because then where does that leave her? Yeah, that is true. Where she's left hanging. Okay, but she's waiting for your call. It's not like life is not happening to her and it's only happening to you. Yeah. She stopped everything that she had to, and you gave her a time of 7 p.m. in the evening. Now she's waiting. It's been 7:15, 7:20, 8 o'clock, and no call has come. Yeah. So that level of disappointment, वहीं से पता चल जाता है, वहीं से, right, that very small incident से पता चल जाता है, this guy is not going to keep his word. And so women have to keep their standards like that. If you keep up with this, yeah, then you will attract these guys only. But if the second you know what you want, again coming back to I want, and the second you point it out, so another exercise, point it out to the guy
and be like, तूने बोला था ये time पे phone करेगा, then you didn't call, and it's okay, don't call me now. Okay? Then if he comes back with an apology and he continues to maintain that contact, when he says he will call, he does that now from that point onwards, then you know that ठीक है, उसने उस time पे इतना seriously नहीं लिया, but now he wants to make it better. He wants to make it right. Yeah. So now you give your attention to this guy properly. But before, if he's doing these things, he's inconsistent. Is it about respect also here? It's about self-respect. Self-respect, yeah. It's not about respecting that person or this person. It's about you respecting yourself and your time. True. Tumhara time is not important or what? Like this very moment has just passed. I said past and it's past. Yeah. So me waiting on my phone, looking for waiting for your call, that was my precious time that I lost. Okay? Because I am that person, I will keep my word. But if you are not, and you got other chicks, please go there. Please. But then, see, even I've learned all of this after a very long time. I've also cried on the internet. I've also, had my moments of where I've been confused and traumatized and like, kya ho raha hai? What is happening? Why are these guys like this and all that? But then I think it's a journey of you finding yourself. Once you know what you want, nothing else matters. You stop making excuses for people. अरे यार पर उसने तो यार ऐसे बोला था, चल ठीक है वो बिजी होगा ना, उसके घर पे ऐसा हो रहा होगा, अरे यार उसके यहाँ पे ये आया था ना, उसकी कॉलेज में उसके एग्जाम चल रहे हैं, उसने बोला था वो वाइवा देने जा रहा है, उसने ये बोला था, उसने वो किया था, तो डेफिनेटली यार अब थोड़ा तो टाइम लग ही जाता है ना, कल कर लेगा, चल कल उसने मैसेज भी किया था, उसने कल कर ही लेगा, एक बार पहले भी हुआ है, 2 बार पहले भी हुआ है, बट ठीक है चल कोई बात नहीं. Yeah, it's every woman. It's not her. It was me also. But then, stop making excuses. That very moment. Yeah. और उसको बोल दो, अब कॉल मत करना. अब कॉल मत करना और फोन मत उठाओ. पर उतना तुम्हारे अंदर वो होना चाहिए, जिगर होना चाहिए. अब मैं करूँगी. अब देखना. I will do this. No, that doesn't mean that you trouble the person. I'm not saying that it's coming from a place that कि मैं उसको trouble. It's coming from a place where you are respecting yourself. Now, इसमें what like I'm figuring कि yeah, self-respect is there. But in some way कहीं एक आध बार अगर से लड़के से हो गया या किसी से भी हो गया. ऐसे कैसे हो गया? अगर with your dad, everything that the guy does just related with your dad and your mom. Always. अगर पापा ने बोला है कि मैं इतने बजे घर पे आऊँगा, पापा घर पे आते हैं. और अगर लेट हो गया तो मम्मी को फोन करते हैं. हाँ, अगर पापा कहीं और जा रहे हैं, कहीं दूर हैं, जो भी है, मम्मी के साथ कांटेक्ट छोड़ते हैं. छोड़ते हैं. छोड़ देते हैं मम्मी के साथ कांटेक्ट. हाँ, मतलब keep contact or no? नहीं जो अच्छा I thought कि he's going somewhere so he's dropping कि मैं इसके साथ भी हूँ तो नहीं तो if he's say probably traveling 10 days, does he not talk to your mom at all? No, he does. Does he not talk to you guys? Yeah, वो spare contact छोड़ के जाते. That's what I was. हाँ, so you get it right? Yeah. So every time contact. Now if your mom, if say for example your dad is supposed to be home by 8 o'clock or 9 o'clock and he's not home by 12 o'clock. Yeah. And he has not called, he's not answering. हाँ. Where does that leave your mom or you guys? वो stage होता है bro के क्या हो गया, कहाँ गए, ऐसा वाला. हाँ. So coming back to the same thing. Yeah. Where does that leave you when? So this just means that the guy is not ready for commitment. When a guy is ready for commitment, he will do whatever. He knows that there's somebody waiting for him out there. For whatever ये, and the girl doesn't have to make excuses. इसमें कहीं ईगो वाली बात नहीं आ जाएगी? क्या तुम्हारे मम्मी पापा के बीच में ईगो है? अगर ईगो होती तो रिलेशनशिप चलता इतने साल? True. रिलेशनशिप में ईगो नहीं आ सकती है, but then सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए. ईगो नहीं चाहिए. सेल्फ रिस्पेक्ट एंड नोइंग, अंडरस्टैंडिंग ईच अदर एंड हैविंग बाउंड्रीज, रिस्पेक्टिंग कि भाई मैंने ये टाइम बोला है, अगर मैं ये नहीं करूंगा, दिस इज व्हाट विल हैपन, माय कॉन्सिक्वेंसेज आर that I will lose my woman. Yeah. But if the consequences are not scary enough for you, then you will not do it. So that means the guy doesn't care. Got it. And so, which means you're not important for him. I'm sorry. Priority नहीं है. तुम हो ही नहीं उसके आसपास की priority में. तुमको friend with benefit बनना था ना. तो वही है, तो तुमको वो मिल रहा है और क्या चाहिए फिर तुमको? Why don't you stop it right there then? Yeah. But then you want him to call you, text you, message you, ये वो blah blah blah, reply to your memes. I think ये word बना है situationship भाई. I think that's where यहीं से आया है वो. See, the thing is, sex is very complicated. You can't just restrict yourself, your body, your emotions to just sex. Yeah. It wants more. That is where it, as I said, it is an expression of love. If there is love and sex follows, that is a safe environment. That you know that this is not going anywhere. This will be there.
But when there is no love and just sex, there is no safety, there is no guarantee, there is nothing. What are you waiting for? I've also learned from experience. Please ये मत बोलना कि ये बड़ी-बड़ी बातें कर रही है अपने podcast में, तो पता नहीं क्या गया. But yeah, I've learned from experience, and I think that is what is important. Learning is important. Having experiences is important. That shapes you, that gives you lessons. But do you have ऐसे friends who like kind of brainwash कि bro ऐसा करना यार, ऐसा होगा यार? Maybe my friends are married. अच्छा, okay, अरे हाँ, but still, तो ये discussion तो ऐसी friends, if my friends say things like that, they are not my friends. अच्छा. Because they don't understand that I have my boundaries and I have my this. All of my girlfriends have always asked me to like keep my self-respect and my head high. And if there's somebody not following or doing things, then they're not meant for you, which is great. Which is great because then I know that although I wasted a lot of my time on these guys, but see, the thing is, you can't hate anyone or you can't be angry at anyone. It's like वो एक पत्थर है वहाँ पे, ठीक है? सब लोग बोल रहे हैं वो पत्थर है, तुमको दिख रहा है वो पत्थर है, ठीक है? लेकिन मैं फिर भी जाऊंगी, मैं जाऊंगी और मैं पत्थर में बज के आऊंगी, ठीक है? फिर बजने के बाद ओ अच्छा ये तो पत्थर था, then चलो now retreat. So it's just that. But it's your journey of walking towards that पत्थर, चोट लगना, and then walking back with that lesson that oh ये पत्थर था, I will try to not repeat it. But the thing is, what happens is every time then you make excuses. Maybe this patthar is different. Maybe this is not a patthar. This looks like a patthar. ये cardboard है, etc. You need to stop your patterns from happening. You need to stop those patterns from forming as early as you can. And I think, see, for us, internet wasn't like in the beginning. तुम्हारे लिए तो बहुत जल्दी आ गया internet. हमारे लिए ये सब नहीं था. तो मतलब we've also learned quite late in life. But you guys have all of this information. All of it is out there. Yeah. So as soon as you can grasp and get out of the loop of falling for these guys who are not ready for commitment. They're not bad guys. They're just not ready for commitment. They don't know what they want. Just like you don't know what you want. True. सही है. Wow यार. Welcome. बहुत ऐसा Not so badmaaash बातें. नहीं but Very संस्कारी बातें. संस्कारी. Therapize हो रहे हैं बच्चे यहाँ पे बैठे with Simmy guys. मजा आया मेरे को तो. पर हाँ, मेरे को एक चीज और आई थी अभी बात करते हुए, भूल गई निकल गया. हाँ, so अभी before this discussion हम उससे बात कर रहे थे कि when I am not comfortable talking about sex in my own house, तो मैं कैसे उसको podcast पे I can be comfortable about it. तो मेरा दिमाग में like first thought which came was कि अभी करंटली लाइक मैं तो चलो हूँ जेंजी, पर मेरे से भी और जो जेंजी है 2000 के बाद वाले भाई, वो सारे they are like now I have seen people putting out videos which are like they are trying to educate people around having sex and मतलब वो भाई खुद 19 के हैं and I'm like भाई 19 साल के बच्चे educating. Yeah, they are like telling my first so and so experience, my first blow job, my first this, ऐसा अलग-अलग चीजें, and I'm like, you have seen this? Okay. So ऐसा, and I was like कि भाई ये इतने में मतलब 18-19 में हो रहा है. But so what? Just अगर मैं कोई absurd सी पिकअप लाइन भी बोलती हूँ ना, मुझे बहुत लगता है कि भाई मेरे को ये नहीं बोलना चाहिए था, shit I did something wrong, ऐसा मैं मतलब एक हफ्ते तक वो चलता है मेरे दिमाग में, जब तक मैं it's not like हो गया निकल गया वो. Otherwise I just crop it out sometimes क्योंकि मैं videos, so for context I make videos and I throw pickup lines on streamers and they react to it and I apologize अगर मेरे को लगता है कि fuck मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया. Yeah, I mean मतलब it's fun only ना, क्या ही बोल दिया होगा ज़्यादा से ज़्यादा. या तो करो मत या तो हो it. It's just that. Don't apologize. नहीं, but I will never apologize for any of it. Okay. I'm proud of it. I think that's one of the even I like when I write my book, which I will one day. Okay, around what? I want to write a book. I'll talk about it later. But like when I do, I will have that one very big chapter in my book, because that was a big milestone to like fucking own it on the internet. Yeah. As the only girl who's sitting and sharing experiences, like she doesn't give a flying fuck coming from the background that I come from. Yeah. That was my. आपको पसंद है पिकअप लाइन्स? मारो फिर पता चलेगा.
भाई फिर स्पॉट पे आ गई मैं। हाँ भाई फिर रुको, नहीं रुको। यार ये ना एक्चुअली मैंने 1-2 पॉडकास्ट में बोल दिया, पर वही आ रही है दिमाग में, बोल दूं मैं, चलेगा? मैंने तो नहीं सुनी है ना, ठीक है। We are like waffles and fruits because you're hot and I want to be on top. तूने सुनी है? इसी में मारी थी मैंने। मेरे पे बहुत पिकअप है। हाँ क्यूट। या तो हाँ अच्छी है ना ये। We're like waffles and fruits. या मेरा फोन देना। Let me write it. Let me send it ASAP. चलो अगर अच्छी लगी फिर एक और। प्लीज मुझे अपनी पूरी लिस्ट दे देना, मैं पूरी यूज करना चाहूंगी। You remind me of a green bottle because I want to mount and do you. ये मेरे दिल पे भाई, इसको साथ से कोई बता दे और यार। Oh God. हाँ तो बस मेरे को ये थोड़ी सी याद थी। और याद है तुझे कोई? इस पे मैंने बहुत सारी मारी थी, मैं इस पे हिट कर रही थी, फिर ये रिलेशनशिप में आ गया, मैं कहा हो। चलो कोई नहीं, you tried. हाँ आप बताओ, आपको पिकअप लाइंस वैसे पसंद है? मैंने कभी मारी नहीं है। किसी ने आप पे ऐसे बम्बल टिंडर पे? हाँ मारी होंगी, बट इतनी घटिया होंगी कि मुझे आज तक याद नहीं है, तो मतलब हाँ बहुत ही बेकार। नहीं है ना सब। हाँ एग्जैक्टली, ये वाला वो हाँ मैं यूज करूंगी। When the time is right, I will use it. ये लेट्स गो। बहुत थेरेपाइज कर दिया यार मैंने आज। मजा ऐसा लग रहा है ये बदमाश बातें में आके जरा भी कुछ इसकी बदमाशी निकाल रही हूँ उल्टा मैं इधर बैठ के, like a mom. She's getting a reality check. Yeah, she's getting shit यार। नहीं कोई मुझे बुरा लग रहा है। Maybe she needs it. Maybe she हर लड़की at this age needs it यार। अच्छा ऐसा सीन है? हाँ, look around you. Are your girlfriends like with you when you say कि हाँ यहाँ वहाँ वो लड़का ऐसे कर रहा था, तुम 3-4 लड़कियों का ग्रुप होगा, फोन पे बात करते होगे, या फिर तुम्हारे पास एक लड़की होगी जो हाँ यार ये भी ऐसा है, फिर वो भी अपना शुरू कर देगी, उसका भी ऐसा है उसका। तो क्या डिफरेंस है बताना तुम्हारे में और उसमें, जो तुम्हें रियलिटी चेक नहीं दे पा रहा है क्योंकि वो भी खुद वहीं पे ही है। हाँ दैट इज ट्रू, दैट इज सो ट्रू। तो आपके हिसाब से गर्ल टॉक्स क्या रहती है आपके? ऐसा नहीं है गर्ल टॉक्स कर, तुम कुछ गलत नहीं कर रहे हो, यू आर जस्ट बीइंग योरसेल्फ एट दिस एज व्हिच एवरी गर्ल इज, सो जस्ट एंजॉय द जर्नी। ठीक है, दैट्स ऑल आई एम सेइंग। तो एंजॉय द जर्नी। आज भी हुकअप No, I mean, why not? See, the thing is, this is your journey, this is your life, your experiences. Nothing is good, nothing is bad. It is what it is. Yeah. Okay, उसमें से तुम्हारा अगर एक्शन का कॉन्सिक्वेंस होता है, बस चॉइसेस का कॉन्सिक्वेंसेस होता है। Yeah. गुड बैड कुछ नहीं होता है, ठीक है? तो तुम करो अपना और तुम अपनी लाइफ जीते जाओ, और लर्निंग्स आएंगी तुम्हारे को अपने टाइम से, और एक्सपीरियंसेस आएंगे, they will take you down like that, crush you, put you on the rock bottom also. And then the same experiences, the learnings out of it will bring you up also. That is what life is. So what you're doing is not wrong. This is what every person goes through. Nothing wrong. It's just that there's a huge gap now between you and me. Yeah. And so like the way I think and you think, there's a difference. That's all. So इसलिए जब आप बात कर रहे हो मेरा जो नहीं, मेरे को तो वहाँ पे हाँ मुझे समझ आ रहा है, मैं समझ गई। I will take notes and मैं अपना प्रोग्रेस बताऊंगी। बिल्कुल ठीक है, अब मेरे पास सिमी का नंबर है, तो फिर I will text her कि I went on this date, I think this is बैड विद टेक्सिंग कॉल कर लेना। अच्छा ठीक है, I will call you and I'll give you date review। हाँ बिल्कुल। डेट रिव्यू आज ये था। बिल्कुल बिल्कुल, नो प्रॉब्लम। हाँ हाँ नहीं, मैं ज्यादा चेप होंगी तो आप ब्लॉक कर देना। क्योंकि I will go out on lot of dates। which you should, right? Yeah. हाँ, Why would you not go on dates? Go on dates. मैं तो पता है दिल्ली में एक जगह सेट कर लिया कि मैं डेट्स पे यहीं जाऊंगी, मैं सोचती हूँ यहीं आ जाओ। हाँ ये मेरे भी था एक। वो बंदा बोलता है मैडम जो कल रात पनीर ऑर्डर किया था वही मैंने कहा भाई थोड़ा तो शर्म कर ले। दूसरा बंदा है ये। Yeah dude, yeah, because वहाँ पे budget is also proper, खाना is proper, location is nice, so yeah you fix a spot। कभी तो वो टेबल भी फिक्स रहता है। हाँ यही है भाई। हाँ बट आपके लिए है ऐसे कोई जगह? अभी नहीं है। earlier there was, now early as in कब? वही जब मैं अपने 5 साल के मजे वाले फेज में थी। ओके सही है, पर 5 साल मेरे को बताओ तो कब की बात है? I think 16 से लेके
20 लास्ट ईयर भी नहीं, लास्ट ईयर से पहले ही खत्म हो गया था। 20 या सही है यार। हाँ तो सही है, ठीक है। तो आप, हाँ मैं वाज आस्किंग कि तो अभी आपकी ऐसे जो गर्ल टॉक होती है वो हाउ इज दैट लाइक इन योर फ्रेंड सर्कल? मेरे बेबी शावर में आना, हम घर खरीद रहे हैं, गाड़ी की प्लानिंग हो रही है, ये वाली गाड़ी लेनी है, वो वाली। करते आप? Maybe we're past gossip. तो We don't like drama anymore. कब की करते थे? I don't gossip anymore. I mean, who wants to know किसी और के लाइफ, मतलब oh drama, oh just keep me away from that dumb energy. You know, like नहीं please, हाँ ठीक है, अच्छा ही, हाँ जो भी हो रहा है. I don't know any movies, any shows, any random whatever is going on the internet. तो आप क्रिएटर गॉसिप से भी दूर रहते होगे? बिल्कुल आइडिया नहीं है मुझे क्या चल रहा है मार्केट में, मुझे कुछ नहीं पता। कुछ तो पता होगा, जैसे कभी It's so funny that all the creators on my set also, like I didn't know shit apart from their work. कोई गॉसिप होगी उनके लाइफ में, कुछ होगा, कुछ नहीं पता था मुझे। कुछ अभी कभी गॉसिप करके जाते हैं? नहीं, हाँ मतलब थोड़ा बहुत, बट वो भी मेरे को याद नहीं रहती है। Like I'm that person, I want to keep my दिमाग का real estate free. Okay. I don't want to use it too much. Fill it up with junk basically. यार I तो live for gossip. Age. यार ये सब मेरी एज पे आ रहा है भाई, मेरे को ऐसा क्या हो गया? कि ओह अच्छा, आप कौन सी जनरेशन? मैं पोकेमॉन के जनरेशन से। तुम कौन सी? सोनपरी पोकेमॉन। ओके, तो यार वो तो मैंने भी देखा था। देखा था? हाँ, तुम्हारे जमाने में भी आता था ये? हाँ पोकेमॉन आता था, पोगो या कार्टून नेटवर्क पे आता था। इनकी लास्ट जनरेशन थी टू वॉच एपिक स्टफ। Yeah. Could watch. Yeah. What else was what like you watched? सोनपरी भी मैंने देखा था। हाँ मतलब शरारत। I used to play a lot. Play a lot, yeah. हाँ मतलब I was more of playing than watching TV because TV टाइम बहुत कम मिलता था मेरे को। एंड वो भी मुझे याद है, शाम को सोनपरी का टाइम होता था, उस टाइम पे मुझे देखने मिलता था। हाँ, या शाकालाका बूम बूम, सोनपरी, या फिर पोकेमॉन उसके पहले आता था, एंड ऑल ऑफ दैट। सो मुझे स्केड्यूल नहीं याद, मैं टीवी ऑन करती थी, जो आता था मैं देखती थी। हाँ मतलब वही, जो उससे ज्यादा, क्योंकि उसके बाद फिर होमवर्क टाइम, हाँ, फिर ओरल लेती है। Yeah, they had like naughty. I didn't watch it, but आता था। I've never liked those naughty, Oswald. I've seen that. Bob the Builder. वो मुझे नहीं पसंद। Like, obviously even I could, but like I just never couldn't. Ben 10. मैं देखा नहीं। There was that हिंदी ये ना जो लुंगी पहन के आता था, छोटा सा, छोटा भी वो। I didn't see that, but yeah, मैं ये देखा था, ये वाला naughty और Shinchan I loved. I used to love Shinchan. Shinchan was okay. Yeah. मेरे को I didn't vibe. मुझे बहुत Shinchan प्यारा Shinchan यार मुझे बहुत irritating लगता था। वही तो पॉइंट था। बट या एंड द थिंग वाज, वो बीच में ना ऐसे पेरेंट्स ना वो करते थे, ऐसे बीच में आ नहीं क्या था, शिनचैन बैड इन्फ्लुएंस है, ये है वो है, तुमने मान लिया अभी ये जो तुम बैड इन्फ्लुएंस तुम खुद कर रहे हो बदमाश का बातें करके? नहीं वो तो हाँ अब बड़े हो गए हैं ना। अच्छा। अभी देखो मैं 18 के बाद जो भी करती हूँ मैं नहीं सुनती घर वालों में ज्यादा। हाँ बहुत बदमाश हो। जैसे मैंने अभी मुंबई का सीन बनाया ना, मैंने उनको बताया कि मैं जा रही हूँ, मैंने पूछा थोड़ी बैड एस या, अब वो कह रहे कहाँ रह रहे हो, किसके साथ रह रहे हो, मैं कहा अकेले। बैड एस रिबेल इन द हाउस। ओह माय स्वैजर देख रहे हो, स्वैजर? यस, सो आई एम गेटिंग देयर। हाँ you're already there. हाँ नहीं अभी beyond, you're not there, you are beyond. आपने कब ऐसे एकदम घर में रिबेल होना स्टार्ट कर दिया था? यार मेरा teenage years were always rebellious only. I've been very rebellious as a child. I don't know how my parents put up with it. अगर मेरी बेटी ऐसे करती तो मैं तो बोलती तू जा भाई, मेरे को रखना ही नहीं है तेरे मतलब तू जा, तू बाहर ही खुश रहेगी, मैं भी घर में अकेली खुश रहूंगी, तू दफा हो जाए यहाँ से। But they still put up with me. So ये and then I think मेरी लाइफ के बेसिक सिंपल फंडे थे कि मुझे मजे करने हैं, you know, and I used to always like whatever. So then I went to hostel and then I had my fun and yeah. हॉस्टल कहाँ पे? बॉम्बे में ही था, बॉम्बे में ही रहती हूँ, केजे सोमाया। मेरे को आइडिया नहीं है। MBA कॉलेज। तो आप वहाँ हॉस्टल में थे, सो
यार हॉस्टल की तो स्टोरीज बहुत क्रेजी होगी नहीं? यार आधे से ज्यादा मेरे पॉडकास्ट में प्लीज वॉच सिमी सेड व्हाट, आई विल लीव अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. उसमें सारे मेरे हॉस्टल की स्टोरीज है, गुड वंस. हॉस्टल की क्या स्टोरी चाहिए? टेल मी, आस्क मी. मतलब ये आपने कभी स्नीक इन किया है किसी को? नहीं, आई वाज डेटिंग एट दैट टाइम. अच्छा ओके. या तो डेट को स्नीक इन किया? नहीं यार, वो दूसरी लोकेशन में पढ़ाई कर रहा था, मैं दूसरी लोकेशन में पढ़ाई कर. ओह ओके. Yeah. तो आप लॉन्ग डिस्टेंस में थे? ड्यूरिंग दैट टाइम. या तो Yeah. हाउ वाज दैट? यार लॉन्ग डिस्टेंस हो जाता है. I think वो age was different and it was That is what 25 24 24. And again, वो age was different, but you know, now it's different. There's a lot more understanding. There's a lot more grounding in a person, and now it comes from a place of safety and relaxed. कि अगर at this age in life, if I've met someone and I've evaluated that person for a while, and I know who this person is and what his values are in life, I've tested him. Yeah. And I know his values and I know this person. So now distance doesn't matter. Now I know that whatever he says, I don't have to question it. I don't have to go around him and check it out and validate myself or my thoughts or whatever it is. I don't have to do that because that is not what relationship is. Relationship is trust. And trust initially has to be done, it has to be built. Yeah. Build करने के लिए वो starting का phase is important where you put down your foot about things. He puts down his foot about things, what he is, what he likes, what he doesn't like, you know, his past, all of that. And then you put down your foot, what do you want, all of that. You slowly build trust where एक दिन से नहीं बनता है trust. Slowly, eventually when you open up to a person, then that trust forms. Then you see consistency, words and actions are matching. And then you know if that person is saying that I'm going here, I will not be able to call you tonight and I'll talk to you tomorrow. And you're here in Bombay, I know he's not going to do anything. Because I know. But I also know that tomorrow उसने बोला है phone आएगा तो आएगा. Nice. This is how you evaluate कि क्या है क्या नहीं है ऐसा. अभी टाइम है तुम्हारे लिए. नहीं evaluate. हाँ, सीख तो. See, knowing is good, yeah. but to reach there is खुद का experience. मेरे से तुम सिर्फ सीख के नहीं तुम कर पाओगे. अरे मेरे को तो यार लड़की ऐसे पूरा अच्छे से बात अभी लाइक बेड तक बात नहीं पहुंची, उससे पहले ही घोस्ट हो जाती हूँ मैं. हाँ, that's so okay. That's better actually. Yeah, actually that's so true. That's so much better. Okay. You're saving yourself from so much drama and trauma and damage. You have no idea. Okay. तो यार घोस्ट तो ghosting is still okay, but then yeah. It's fine. तुम मत बोलो. No, it's fine. But then understand if somebody violates a personal space in a very different manner and gives you hope, but then doesn't live up to it, then the trauma is so different. Have you ghosted someone? I haven't ghosted anyone. I've just been through phase. You've told them ki... I've told them that I want commitment, and in the beginning they've pretended that they wanted commitment too. In fact, one of them even said he wants commitment. He followed it up for a while. But you know, the thing with these guys is that they can't follow it up for a very long time. That facade of it just comes down in like a month or two. Yeah. 3 months max. So, yeah, I mean, then you know who this person is. But ऐसा हुआ किसी ने बोला कि हाँ commitment they are interested and but you figured कि यार नहीं है ये ऐसी फेंक रहा है बस बोल रहा है. उस time पे I could not figure because I used to fall for words. Yeah. And I used to blindly trust without verifying his actions. धीरे I understood. बहुत मेरे को भी झटके लगने important थे at that point. I was too naive. Yeah. But then you learn. See, these things are important. But otherwise, what else is there to life? You can't just be, oh, I want a happy-go-lucky, chill life. No, there's a personal journey of every human being is important, right? And the journey comes via these experiences. Got it. सही है. तो अभी आपकी लाइफ कैसे चल रही है? क्या चल रहा है? अभी मेरी लाइफ अच्छी चल रही है. Touch wood, it's basic. I like basic. Basic is a luxury, honestly. Yeah. You don't get basic. Yeah. But हाँ. And with content, what's happening? Okay, so I've switched my content to hair care now because hair. I saw the video. Because hair has been a very important subject to me all my life. Earlier, when I was a teenager, I had like really thick long hair. Okay,
And then like I started losing my hair all of a sudden as soon as I hit puberty, you know, and uske baad mein it never stopped. So I lost about 95% of my hair. Whatever previous videos or whatever you've seen of me, I used to wear extensions, hair extensions. And I used to be very open about them on the internet also. Never hidden anything. I was like, hair to hai, ab kya kar sakte hain? But then last year it came to a point where I couldn't even wear extensions because my hair became so fine and so thin. And so last year I really went on a journey of like, you know, making things better. I was like, ये last try दूंगी और ये last try ऐसी try दूंगी ना कि मतलब this will be the try. I saw a video you recently posted. Yeah, that this is it. That if it doesn't work, it doesn't work. At least I will not have any regrets that I did not give it a shot and a honest shot. Yeah. So then I just went on a... So how's it going? Oh, it's been great. What you see right now is so much better than what I started. I mean, obviously I cannot compare to people with great hair. Yeah. That was never the point anyway. But from my own hair last year to now, where I don't even have to wear extensions and I can just, you know, now it's recovering. It's great. It is great. And so now I want to create more content around that because this is new. This is my journey. I literally just start. It's like, before God shuts one door for you, he already opens another one. You just have to look. Yeah. So right when the podcast was like, you know, shutting or I was taking a break, I already was on the hair care thing, which I so passionately and deeply wanted to. When did you record your last podcast? December last year. December 22. To December 22, and it was supposed to go on till April, like the shoot that I'd done. Achha, yeah. But then the hard drive crashed. So context. I lost all of it. लोगों कॉन्टेक्स्ट दे दो क्या हुआ था. बेसिकली बहुत कुछ हो रहा था, पॉडकास्ट पूरा जिंक्स हो गया था. व्हाटएवर आई वाज डूइंग वाज नॉट लाइक इट वाज जस्ट नॉट वर्किंग, वाजंट स्मूथ इनफ. हर एपिसोड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, अपलोड में प्रॉब्लम हो रही थी, कुछ सम व्हाटएवर वाज हैपनिंग. देन शूट के दिन बहुत प्रॉब्लम हुई. हम लोग सामान बांध के रोड पे घूम रहे हैं यहाँ वहाँ, एंड लाइक पीपल फाउंड आउट दैट वी वर शूटिंग, सो you know, it was a big thing. Yeah. Then shoot ho gaya kisi tarah. We managed our 3 days of shoot, and then right before we were taking the backup, the hard drive fell, and the hard drive had fallen a couple of times before also, so we lost all of the content. And then when we lost the content, that I don't know, something just told me that just stop, it's okay. So yaar wo kaisa, like, see, how did you just accepting? Accepting is a beautiful thing. I don't know, why do you want to hold on, and why do you want to drag, and why do you want to just, but that time it was, but this, you can't recreate. If you want to keep recreating a certain experience in your life right this moment जो तुम्हारे साथ पहले हुआ है, then you're setting yourself up for failure, because every moment is different. Every you know, that moment has passed, that made you feel a certain way at that point of time when you were also that person and all of it. Now the time has passed, now you've reached here, whatever it is happening, तुमको पता है, तुम्हारा gut is telling you, no matter how many people are telling you to keep continuing it and do it, it was so great and all of that, but your gut is also telling you that ठीक है तू करेगी, you're not the same person anymore. So you want that same vibe to come from Simmy Said What right now, but ask yourself, can you do it? And if it's ending, then probably take it as a sign, and why not just accept it? Do things like, why, like, it's just accepting the fact that, oh, that was such a great thing to happen to me and I did it, just taking all of the pride in it, and then moving on with all of that information, knowledge, experience, memories, taking it somewhere else and applying it to another thing and creating something bigger than that. Yeah, why not? ऐसा तो नहीं हो गया ना कि बस खत्म, now I am done, like मेरे जिंदगी का क्रिएटिव जितना भी भगवान ने मुझे भर के खत्म हो गया कि अच्छा ये तो हो गया कि दिस इज लाइक थोड़ा सा पर्सनल जर्नी कह लो इसको, बट एक हो गया कि अब थोड़ा सा आपको प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे इसको कि बिकॉज यू हैव गेन्ड एन ऑडियंस व्हिच वाज फॉलोइंग सिमी सेड व्हाट, या नाउ इफ यू आर डूइंग सम अदर, आई विल लूज दैट फॉलोइंग. या सो नहीं, सो ओके. Yeah, exactly. Okay. The point is, so wow. The thing is, you can't hold on to things and people, and I totally respect them. They followed me for something. Yeah. And I'm not giving them that. I cannot expect them to stick around. Wow, yaar, ye to bahut, like, that's a very tough thing to do, to be honest. It's not tough, but you build yourself again. That's what life is. You start from scratch again. Because I started from scratch so many times in your life. channel name is Simmy Gora only. Yeah. So my channel name is Sukriti Grover, and उसमें मैं upload Badmaaash Baatein, because before that I used to do vlogs, and उससे पहले भी I used to do street interviews when it was a thing. So
have tried different things, and वो pickup lines भी बीच में आ गया था lockdown के चक्कर में. So again there was a journey of content I was trying, but then a lot of people around me, creators, audience, सबने मेरे को ना एक ये feedback दिया कि बदमाश बातें should be a separate entity. मैंने मेरे को भी बहुत लोगों ने बोला था. I just didn't want to. See, the thing is that it was year 1 for me. Yeah. And I didn't know if I would grab so many eyeballs also. I'll be honest. Yeah. So I was like, starting से अभी क्यों करेंगे? I already have this audience, so I'll just start. Yeah. And that's fine. That's fair. Build a brand, take it ahead, let it be a couple of years, and then wherever you go, it doesn't matter. If you create another one, they'll come, they'll watch because they like you for you. Yeah. So that's true. मैंने फिर उसके बाद like I was also starting to stream, तो मैंने उसके लिए एक अलग चैनल बना लिया. तब तो दिमाग अक्कल आ गई कि अब ये कर रहे तो ये अच्छे से अलग से करते हैं. But with podcast, I was very confused. Now, बीच में 2022 entire year I took a break. Barely 5 episodes came out in बदमाश बातें because मैंने थोड़ा job वगैरह ले लिया था because पैसे का वो आ गया था. Bro, पैसे चाहिए अब life में. So उसके बाद मतलब थोड़ी अक्कल नहीं थी कि bro how I'll monetize this या क्या. I was very confused. I'm like bro I'm getting it. Offer अच्छा था. I took it. Later on I realized it's not for me. I left. And August पे I left. उसके बाद I was prepping for कि bro बदमाश बातें full throttle जा रहा है अब. कि there is no vlogs, nothing else, just बदमाश बातें is there. So then I got into this. अब again there were people कि bro if you are doing this अच्छे से just do it on another channel. There is nothing to lose. But why do you want to listen to so many people? Yeah, why? So because I just feel कि then you'll always be confused. You'll not be giving your 100% anywhere. Yeah. Just do what you're doing right now. Stick to it. मैंने वही अब सिर्फ बदमाश बातें ही आते हैं. बस खत्म हो गई फिर. तो क्या प्रॉब्लम है? Do you think I should rebrand also? सुकृति ग्रोवर को नाम चेंज कर दूँ? तुम्हारे ऊपर है. Whenever you think the time is right, you will know when the time is right. Right now you're confused. Let it come from within. हाँ यार मैं बहुत ऐसे confused हो जाती हूँ because I just feel I can't understand this internet. This really feels like therapy. No. I have a cousin in Delhi. She's young, very young. Yeah. When she talks to me, she's also like this, exactly like this. And then when I'm telling her, then I give her like flat out straight answers, and she's like, हाँ, oh ये भी होता है, अच्छा ये भी कर सकती हूँ मैं, अच्छा हाँ, अरे हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ये तो इतना सिंपल कर सकती हूँ मैं. हाँ बट सिंपल होता नहीं, करके देखता. ट्राई करूंगी मैं. I will try. नहीं मेरे को पर्सपेक्टिव चाहिए था. मेरे को अच्छा लगता है लोगों से बातें. हर इंसान को अच्छा लगता है पर्सपेक्टिव लेना और बातें करना. आपको भी? आप कैसे पर्सपेक्टिव लेते हो? मेरा पेट गुड़गुड़ कर गया. सुनाई दिया सबको? नहीं मैं पर्सपेक्टिव लेती हूँ. I mean anybody who's been through a journey, who has a little bit of ground. आप creators से पर्सपेक्टिव लेते हो? Do you have any creators in touch जिनसे आप like you back and forth ideas or something? नहीं. Why? I am not. No. In the book. I mean I should probably, but I don't. I told you right, like stay away from people. But then फिर आपका नेटवर्क कैसे बना रहता है? Like when you are getting people, तो अगर No, it's not a network कैसे बना रहता है. It's like you offer something, they have something to offer, and then you come together as a collaboration. Okay, let me put it. Doesn't matter that if only they are my friends, they will come on my they will have a collaboration. No, it's like I bring something to the table, you are bringing something to the table. If you think that this is a collaboration that can benefit both of us, let's just do it. I get it. So you keep things very professional in that terms with the creator space or ऐसा. Personally इतना नहीं है. No, I have friends, but like not as much. Like it'd be yeah, I mean they are nice. I talk to some of them, but that's literally about it. They're not. I'm not involved in their in their personal life. They are not involved in my personal life. You need to know where to end it. Wow. That's how you maintain. That's how you maintain harmony and peace everywhere in life. Wow. Knowing where you kids यार. नहीं मेरे को पता ये मैं कर ही नहीं पाऊंगी. मेरे को अब कोई भी गेस्ट आएगा, अच्छा आपको गॉसिप बताओ ना मेरे को. तो तुम शुरू कर रहे हो ना वहीं से. तुमने शुरू कर दिया उसकी वहीं पे एंटर करना. फिर वो एंटर करेंगे और फिर वहाँ पे देन एवरीथिंग इज मिसमैच्ड. ये यहाँ से वो उठा के लेके जाएंगे कुछ. वो म्यूचुअल क्रिएटर्स वाली बातें शुरू हो जाती है. अगर क्यों करनी क्यों है? हाँ पर क्या हो क्यों करनी है कि इतना क्यूरियोसिटी क्यों है? क्योंकि मतलब कोई इंसान और दुनिया में कोई गलत कर नहीं सकता. अगर उसने कर दिया तो उसकी हाँ हु करनी चाहिए. जस्ट बिकॉज किसी ने लाइफ में कहीं कुछ गलत कर दिया या उस मोमेंट में उसने अपने आप को एम्बैरस कर दिया या उस मोमेंट में उसके लाइफ में कुछ कंट्रोवर्सी या ड्रामा हो गया, तो उसको उस चीज को 15 लोगों के बीच में क्यों डिस्कस करना है? इंसान है यार वो भी. हो गया खत्म.
तुमसे भी होगा, तुम तो फिर तुमको डरना चाहिए. Then you should also judge yourself right that very moment when you are fucking up in life, that you will also be dragged outside like that. If you are dragging people outside, be prepared. Then फिर तुमको बुरा लगना ही चाहिए. Oh shit, लोग मेरे बारे में बात करेंगे. हाँ, definitely तुमने की है, करना भी चाहिए. नहीं, मैं नहीं करूँगी कुछ. I'll be the gossip. But when you're asking मसाला ले लेके बैठ के चटकोरे खा के, हाँ, किसी और बेचारे की लाइफ में कुछ अगर हुआ है, हाँ, वो बेचारा नहीं, अगर नहीं भी है तो क्या? He's a human, he, she, whatever they are, people. People are bound to make mistakes. True, that is true. Yeah, but yeah, gossip as in not like कि mistakes. It could be anything. Anything else. Could be their personal life. Yeah. And mostly it is personal life. Personal life और YouTube पे ही अगर ठीक है ना, तो कल तुम भी discussing. No, but the thing is, so you're saying that तुम YouTube पे कभी कुछ तुम्हारे यहाँ से कुछ कभी गड़बड़ नहीं होने वाली है? I don't think so हुई है. अभी तक नहीं हुई है, but are you sure in future में भी नहीं होगी? I hope so. You can only hope. But then अगर होगी, then you will be dragged. Then be prepared for it. But it's not, I'm not saying कि ऐसा कुछ गलत है एकदम, मतलब नहीं, but तुम बातें कर रहे हो ना किसी और के बारे में. तुम्हारे घर में अगर समझ लो कुछ हो रहा है, और तुम्हारे घर की बातें, जो तुम्हारे फैमिली की पर्सनल बातें हैं, ठीक है, वो कोई तुम्हारे आसपास की नेबर ने आके सुन लिया, जो भी है, उसने, तुम्हारी मम्मी ने कॉन्फिडेंस में उसको बताया कि भाई हमारे घर में ये ऐसे सिचुएशन चल रही है, और तुम्हारी मम्मी ने वो आंटी को बताया, और आंटी ने हाँ नहीं कोई बात नहीं, हम हैं आपके लिए, जो भी है हेल्प करने के लिए. अब वो आंटी जाके 15 लोगों को बिल्डिंग में बैठ के बता रही है, तो कैसा लगेगा यार? वो तो होगा कि जैसे बहुत पर्सनल चीजें या ऐसा कुछ. तो जो तुम इस पर गॉसिप में मेरा मतलब है, I want to justify my gossip कि जैसे कि I would not say, okay, I think मेरा जो term है, it shouldn't be gossip, it should be discussion. It is कि जैसे if I am following a creator, discussing someone's life. No, not life. Discussing someone's content, work, yes. Okay. कि bro, but where are you coming from and how much of credibility do you have in that space to give your again कि भाई ये उस पे नहीं आ रहा कि I am judging them कि what they are doing. I'm just saying कि अगर हम बैठे हैं, I'm telling you कि okay, I watched this XYZ creator. भाई ये क्या इसने crazy चीज बनाई है. I think मतलब you know, अच्छी बातें करना is not gossip. It is gossip. This is not gossip. If appreciating someone is not gossip. नहीं, and then it might just go into more कि अच्छा थोड़ा depth में जा रही है चीजें बात करने में. I don't know. Oh, so basically it starts off with appreciation. Oh, ये तो अच्छी है. But तुझे पता है उसने क्या किया? यार, पता है? हाँ, अच्छी होगी अपने घर पे. No. मैं यार अभी एग्जाम्पल भी नहीं दे सकती ना नाम लेके, दिक्कत ये है. हाँ दे रहा है. हाँ मतलब क्यों, पर क्या हो जाएगा अगर उसने कुछ किया नहीं किया. हाँ बट ये पर्सनल लाइफ में तो मैं जा ही नहीं रही, बट कभी कभी जैसा कंटेंट भी उसने अगर बना दिया तो भाई उसने बना दिया यार, उसने बना दिया, उसने डाल दिया, उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, उसने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे knowing what she or he has done has posted it. They are far ahead of you. You are wasting your precious time discussing what they are doing, which they are already monetizing. So 1 second. Yes. Who's the stupid one? Me. Exactly. भाई आज तो हो गया ट्रूथ बॉम्ब. ये पूरा एपिसोड इज जस्ट अ रियलिटी चेक. सुकृति ग्रो रियलिटी चेक गाइस. ओके यस ठीक है, मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिल गया है आज. एंड आई थिंक 1 hour 27 minutes. बेबी 4 o'clock से पास्ट हो गए, मुझे घर जाना. आपने मेरे को बोला, तुमने भी क्यों नहीं दिया मेरे को? 2 part है. Oh shit. Oh my god, this is I think the first time कि मैंने खुद भी टाइम नहीं दिया. रियलिटी चेक्स मिल रहे हैं ना, समझ नहीं आ रहा टाइम कैसे चला जा रहा है. Shit, okay, we'll quickly wrap I just hope the audience doesn't hate me. They be like, ये कौन सी चुड़ैल को लाके बिठा दिया यहाँ पे. भाई मेरे को तो बहुत कुछ मिल गया आज. समझ आ गया, कंटेंट भी बाहर की बात है. उससे ज्यादा मुझे रियलिटी चेक्स मिले कि हाँ ये करना चाहिए. But yes, thank you so much and for this therapy session. Really did feel like therapy, to be honest. But you know what, like, see Sukriti, the thing is that I've been where you are. Okay. I've totally been there. Yeah. Probably
gossip maybe. I have. So we are people, right? Yeah. The thing is now, ये जो मेरे को understanding हुई है कि bro, I am wasting my time talking about other people. Got it. और I am wasting my time doing this thing. I mean, I could be doing other things. I've had my journey. और बहुत तुम तो फिर भी अभी ये एज में सीख रहे हो, या तुमने मेरे से सीख लिया. मेरे टाइम में तो कोई ऐसे बोल नहीं रहा था या जो भी बता नहीं रहा था, तो there was no pause or no stop. It was my own circle and loop of falling into things because of my own doings and actions, and then figuring it out, and then therapy पे 50 इतने पैसे खर्च करके उसके बाद नहीं. तो अगर तुमको अभी मिल रहा है तो there's nothing like, oh, I'm doing something wrong. Absolutely not. You're living your life. That's how people are. So with time, जो maturity और जो understanding of everything comes with time. So अभी तो तुम सिर्फ कॉलेज में हो यार, अभी तो तुम स्कूल से छूटे हो, अपने ऊपर हो थोड़े 2-4 साल से. अभी तुम थोड़े तो अभी तुम एडजस्ट कर रहे हो. स्कूल में तुम्हें कुछ नहीं सिखाया कि लाइफ में कैसे जीना है, क्या करना है, कुछ नहीं. अब तुम लाइफ जी रहे हो. तो अब जब लाइफ जियोगे तो पहले तो तुम थोड़ा शेक होगे ना, थोड़ा तो तुम्हें एडजस्ट करने के लिए, रूट्स फॉर्म करने के लिए टाइम लगेगा. सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, व्हिच इज ग्रेट. Because you have to be like, you can't be like, oh, I'm a wise person. ऐसा नहीं होता है. Wise people और या फिर जो भी maturity जो भी होती है वो experience और age से आती है. So enjoy this time that you have. Make mistakes. Mistakes are not bad. Have experiences. Make memories. That's it. Nothing else matters. Even if you want to gossip, dude, gossip away. क्या कौन रोक रहा है? Nobody's stopping you. मुझे तो I was living on gossip. मैंने कहा आज से बंद करना पड़ेगा क्या? See, जब मन करेगा तब बंद करना. When you really feel like it, just because मैंने कुछ ऐसे एकदम बोल दिया जोर से, तब नहीं. तुमको मन करेगा अंदर से, because जो मैंने बोला ना वो टेम्पररी होगा, जो अंदर से आएगा ना वो परमानेंट होगा. ठीक है? तो इतना गॉसिप करो कि तुम किसी दिन तुमको सेल्फ लोडिंग हो जाए अपनी गॉसिप सुन के, और फिर तुम बोले आज के बाद गॉसिप नहीं करूंगी. वो बेस्ट होगा. ये बहुत टेक अवेज हो गए भाई आज के. तो मैं तो बोलती हूँ स्टार्टिंग वाला पार्ट पूरा निकाल देना, सिर्फ ये डायरेक्टली जहाँ से मैं इसको रियलिटी चेक दे रही हूँ ना, पूरा एपिसोड अबाउट रियलिटी चेक ही कर दो. स्टार्टिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट एट रियलिटी चेक्स विद सिमी गुराया गाइस. बट this has been amazing. मुझे तो बहुत like genuinely I really had fun. मतलब this is the first episode ever जब मैंने खुद टाइम दिया कि कितनी रिकॉर्डिंग हो गई. Oh, oops, all the guests who've been here before, I'm sorry. It's like usually I take notes कि हाँ टाइम चेक करते रहती हूँ मैं. No, that's but हाँ किसी को disrespect. Thank you. नहीं, I कोई disrespect. Yes guys, please subscribe to Simmy Said. If you haven't followed her Spotify, please करो यार. बहुत Spotify नहीं, mostly Instagram and YouTube right now. Spotify अभी के लिए तो pause पे है ना. You can go listen to my previous episodes. Yeah, she has a very nice podcast. बहुत crazy podcast है. I mean मेरे को था कि मैं बदमाश बातें करूंगी, आज एक्सट्रीम लेवल पे पूरी बदमाशी निकाल दी मैंने. आप पूरी बदमाशी. But yes, thank you so much for coming. मुझे बहुत मजा आया and it was a great time having you here. I was lovely being here. Thank you for having me, Sukriti, and I wish you all the best with your podcast and your work, and I hope we see each other very soon. Yes, for part 2 of therapy. Yes. Chalo, yeah. Okay.